difference between strings and numbers. We're going to go on this path inshallah and we're going to cover it. So user input is what a person enters on the keyboard. जैसे इंसान जैसे हम लोग जब टाइप करते हैं, whether that's a character, a press enter, arrow or an enter key or anything else. That is basically, you know, what we call it an input. User input comes into Python as a string. Now वो जो input आप कर रहे हैं, that is a string, which means that when you type the number 10 on your keyboard, Python saves the number 10 into a variable as a string, not a number. ये important चीज़ है. अब कैसे ये क्यों होता है, अब हम इसके ऊपर देखते हैं इंशाल्लाह. देखें, पाइथन को आपको बताना होगा कि भाई डिफरेंस क्या है नंबर 10 में या स्ट्रिंग 10 में, वेरिएबल 10 और स्ट्रिंग 10 में क्या डिफरेंस है. बोथ लुक द सेम, राइट. अगर आप इस 10 नंबर को देखें और यहाँ पर इस 10 नंबर को देखें, दोनों सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कोटेशन का. The only difference being that one is surrounded by quotes. जो एक ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको हमने कोट में डाला हुआ है. But to a computer, the two are very different. For example, suppose that we compare the value of a variable age to a number if an if statement like this. अब हम देखते हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर. जैसे age equals 10. If age equals 10, then print what's the best way to speak to a monster and from as far as possible, from as far away as possible, right? So अब हम इसको टाइप करके देखते हैं कि what's the difference between this and that. देखिए मैंने ये एक विंडो खोली है अपने लिए ताकि मैं इस पर रन करके देख सकूं इंशाल्लाह. सो लेट्स गो टू अ क्लीन सेल. Sorry about that. Let me fix that. प्लीज़ मैं जल्दी में कॉपी पेस्ट करता हूँ कमांड्स को, ठीक है. यहाँ पर वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स को आप टाइप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको अंदाज़ा हो, क्योंकि मैं अगर सब कुछ टाइप करके करूँगा तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. तो प्लीज़ याद रखिए इसकी तरफ. सो एज हमने डिफाइन की 10 साल. इफ़ एज इक्वल्स 10, रिमेंबर यू नो आवर ऑपरेटर्स. अगर 10 के बराबर है देन प्रिंट व्हाट्स द बेस्ट वे एंड देन व्हेन वी रन इट it gives us the. Now if we put this a single quote, right, single quote, अब अगर मैं सिंगल कोट के बाद रन करूंगा, so it will give me anything because it doesn't define, क्योंकि यहाँ मैंने नंबर डन कर दिया है कि भाई ये जो है स्ट्रिंग बना दिया एज अ वेरिएबल, और यहाँ इफ एज लिखी हुई इक्वल्स वेरिएबल 10 देन मुझे बताना. तो इट्स डजंट डिफाइन, उसको पता नहीं चला पाइथन को कि भाई ये क्या चीज़ है. इट डजंट नो, इट्स नॉट दैट इंटेलिजेंट इनफ, राइट. सो यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लेन इट टू पाइथन कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं. सो लेट्स गो बैक. सो हाउ डज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रियली वर्क्स? वेल, बिस्मिल्लाह. It is magic. That's there's no such thing as magic. Well, there is, like from Islamic point of view, yes, but you know, in computer maybe it's kind of like how you do how the inner things work out, inshallah, right? So let's move on. So string into a number using int. तो integer int हम use करते हैं converting variables into numbers and numbers into variables, right? For example, you can convert the string 10 into a number with int, integer, right? So we define कि भाई age equals 10, then converted age equals int age. Now this अगर हम ये लिखेंगे then it will define के फिर वो पाइथन को समझ आ जाएगी कि this 10 is basically a number, right? Because it is defined कि भाई converted जो age है वो convert करना है आपने age को integer 10 में, यानी कि as a digit करना है आपको, and that's what makes a difference, राइट. सो इसको याद रखिएगा. अगर नंबर को आपने, अगर मैं ये कमांड उसमें ऐड करके दोबारा से रन करूं उस चीज़ को, राइट, गिव मी 1 minute. I have to change the commands. So age equals 10 and convert age into integer, and now if converted age equals 10 then print, and then when I do this it will give me, oh, it's giving me an error message. Hold on, let me fix this. So basically इसको यहाँ से इसके indentation को ठीक करना था. Now if we run it, it will give us the age. Now if I make this into 11,
it won't give it to me because now it is recognizing कि age किस तरह से है और numbers string क्या चीज़ है. अगर मैं इसको define कर दूँ कि भाई remove that, it won't be able to recognize again, right? So you have to go back and make sure कि अगर आपने string या variable में आपने किसको क्या रखना है, do you want that variable to be a number or do you want that variable to be basically a text? And for that you use the int integer that defines कि भाई ये जो number होगा, जो 10 लिखा होगा, it's not a text, basically it's a number, and that's how we define it, right? So let's go back. String into a number using int, so converting variables into a numbers and numbers into variables, right? For example, you can convert the string 10 into a number with int, and that's how you do it, right? And then if you number into a string karna hai, तो then you use str, right? That's how you do it. The variable converted age would now hold the number 10. To convert a number into a string, use str, and that's how we do it now. If you want to do that, अगर आपने single quotes हटा दिए, then this is a variable. This is a number into a string now, right? It's the opposite way, and that's how you do it, inshallah. So this is an example जो मैंने आपको command line में run करके दी थी. Now again, play with this thing. आपके पाइथन अल्फ़ा से जो कि अभी इंशाल्लाह 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, नॉट 26 नवंबर बल्कि हाँ 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे. सो इन द मीन टाइम आप यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स लगाएं. दिस इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये ऑपरेटर्स लगाकर इनके साथ एक्सपेरिमेंट करें एंड सी कि आपके पास क्या results आते हैं, because that's very important. That's the only way you can learn, inshallah, right? So play with it and let us know, inshallah. Next ये हमें क्या है कि what if you use a number with a decimal? अगर number decimal के साथ use करेंगे तो क्या होगा? For that we have a different way of doing it, and again उसमें int लगाएंगे उसको, you use it in the same way. And that's how you define it, basically, to make sure कि भाई वो उसको define कर सके. So try this and let us know कि आपका कैसे चलता है. Basically अगर आप इसको copy करेंगे ऐसे ही and you just copy and paste it, don't do that, just type it in the command, right? Again indentation दें आप इसको, because it doesn't have any indentation right now. अगर मैं बगैर indentation रन करूँगा, it will surely throw me an error message, right? So expected indented block होना चाहिए यहाँ पर. You do that right now, it will still give me an error message जो कह रहा है कि भाई it doesn't recognize 10.5. What is 10.5, right? So for that, you see the invalid literal for integer with base 10.5. For that we use a float command. The float command जो होता है वो decimal के लिए use होता है. A value error is what Python uses to tell that the value you have tried to isn't appropriate. That's the error message जो हम लोग अभी देख रहे हैं, value error, right? So इसको define करने के लिए हम क्या करते हैं? To fix this, use the function float instead of int. So use a float. Float अगर आप लिखा होगा, then you can use basically decimal value as well, right? The float function can handle numbers that are in integers, right? And that's what we do it. So let's run this code command and see what happens. Indentation देना ज़रूरी है, याद रखें. If you don't do that, you will get an error message. Okay, let me see. See, if the converted age equals 10.5, then go there. If not, then don't go there, right? So you have to play with this. आप इस कॉन्सेप्ट के साथ प्ले करें. इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्टार वैल्यू क्या चीज़ है. दिस वाज द फाइनल लेक्चर रिगार्डिंग हमारा जो पूरा स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स का था, इंशाल्लाह. सो स्पेंड सम टाइम आस्किंग क्वेश्चंस, इफ एंड एल्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज़ जस्ट द पाइथन प्राइमर. हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे, आगे चीज़ें डिफरेंट आएंगी. मकसद हमारा ये है कि आपको पाइथन अच्छी चलाना आ जाए. नाउ वी वांट यू टू बिकम अ